Hello everyone, good morning children. Welcome to Phoenix International Group of Schools and welcome back to the class. How are you all? I hope you all are fine and doing well, and I hope you all are studying there. So children, this is the environmental studies textbooks. As you know that, make sure that whenever you are attending our classes, either it is Urdu, English, Maths or EVS, you should sit along with your textbooks children, okay. Whenever you are watching the video, you should sit along with the textbooks. जब भी आप अपनी क्लास को वॉच करेंगे, चाहे वो उर्दू या फिर इंग्लिश, मैथ्स और EVS, आप अपने अपने टेक्स्ट बुक को साथ में लेकर स्टार्ट करेंगे क्लास, ओके चिल्ड्रन. Now open your textbook and take out this page number. As you know children, this lesson already we have finished, right? What is our lesson name? Our lesson name is our internal organs and their functions. What is our lesson name? Our internal organs and their function. कि हमारे internal organs and function. What do you mean by the internal organ? I said you in every class I am repeating this point children, okay? So what do you mean by the internal organs? The parts, the body parts which are located inside our body, that is called internal organ, and we are seeing their functions also, okay. So these organs makes up what? These organs makes organ system. ये सारे organ क्या करते हैं children? Combinedly they are making organ system, okay. Now total how many organ system we have? We have total 8 organ system. What are there? Skeletal system, muscular system, circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system, excretory system and reproductive system, okay. And out of these almost we have completed 6, right, we have completed till 5th one. Now we have to complete more 3: digestive, excretory and reproductive. Now can you tell me what do you mean by the skeletal system children? Skeletal system, what do you mean? Yes, all the bones which are present in our body, they makes what? A skeletal system. Total how many number of bones we have? We have 206 bones, okay. Now ये सारे bones क्या कर रहे हैं? They are making what? A skeletal system, and we can say skeletal system is made up of bones. Skeletal system किससे बना हुआ है? That is with bones, okay. Second one, muscular system. What do you mean by the muscular system? All the muscles of our body makes muscular system. Total how many muscles we have? 650 muscles. 650 muscles we have. All the muscles makes what? Muscular system, okay. Third one, circulatory system. Circulatory system. As we know that blood and oxygens will pass what? Will pass from heart to all parts of the body and from body parts to the heart, okay. So this circulation of the blood makes what? Circulatory system. Nervous system, brain and spinal cord is included in the nervous system, and in nervous system we have 3 types of nerves. 3 types of nerves. What are the names of that nerve? Sensory nerves, motor nerves and mixed nerve. Sensory nerve, motor nerves and mixed nerve. What the sensory nerves do? Sensory nerves bring the what? Message from the sense organs to brain, okay, to brain. Now what the mixed nerve do? Mixed nerve carry the messages from the brain to the sense organ. Sensory nerves. What the sensory nerves do? Bring the message to body parts to the brain. And second one, motor nerves. Motor nerves, what the motor nerves do? Motor nerves carry the messages from the brain to the body parts, okay. Mixed nerve do this 2 things, okay. It carries the messages also and it can transform the messages also children, okay. Now today we have to start with the respiratory system. Already we did, right? Respiratory system, which part of the body involves? Lungs involve, okay. The inhalation of air, we do what? Inhale and exhale, okay. When we are inhaling, what is the passage from where the air will get in? Air will get in through our nostrils. Nostrils to pharynx and then trachea and then finally lungs children, okay. These we have studied. Now today we have to start from digestive system. This is digestive system, and you can observe in the diagram also. We have stomach and all. What do you mean by the digestive system children? The food which we are eating, that will get digested in the digestive system only. जो हम food eat कर रहे हैं
रेगुलरली वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है. ओके, वन टाइम जो ईट कर रहे हैं आप, देन आफ्टर सम आवर्स दैट फूड इज गेटिंग डाइजेस्टेड, वो फूड पूरा डाइजेस्ट हो रहा है, देन अगेन वी आर ईटिंग द फूड चिल्ड्रन. ओके, सो ऑल दिस प्रोसेस वेयर इट टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव system only. Let's read now. The digestive system consists of mouth, the stomach and the intestine. Digestive system meaning here it is a digestive system includes, कौन से body parts में includes है digestive system, कितने body parts को मिलकर ये system बन रहा है, mouth, stomach and the intestine. Okay, mouth, stomach and intestine. You can see this is the mouth and this is the stomach and this is the intestine. We eat food through our mouth and हम फूड को कहाँ से ईटिंग करते हैं, थ्रू आवर माउथ, हम अपने माउथ से ईट कर रहे हैं. द फूड दैट वी ईट थ्रू आवर माउथ गोज इनटू द स्टमक एंड वो फूड जो हम माउथ से ईटिंग कर रहे हैं वो कहाँ पर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जा रहा है. बिफोर इट रीचेज द स्टमक इट इज़ च्यूड बाई टीथ एंड बिफोर इट रीचेज टू द स्टमक इट च्यूड बाई टीथ. बिफोर स्टमक में जाने से पहले वो जो फूड हम ईट कर रहे हैं वो कहाँ पर, हम अपने माउथ में, हम अपने टीथ से उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं. व्हाट यू मीन बाय च्यू, चबाते हैं उसको. ओके, च्यू मीन्स चबाना, वी च्यू इट. ओके, देयर आर, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर च्यूइंग, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग. ओके, सो वी हैव, देयर आर 32 टीथ इन द ह्यूमन बींग्स. इन ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ है चिल्ड्रन, वी हैव 32 नंबर ऑफ टीथ. ओके, there are 4 types of teeth and in our mouth we have 4 types of teeth होते हैं जो फूड को chew करते हैं, जो फूड को चबाते हैं. like that we have what, 4 kinds of teeth we have. what is the name, turn the page. first one is incisors, canines, molars and premolars. okay children, what we have, canines, premolars and molars. okay, incisors bite the food. Now all these 4 kinds of teeth have what, different functions. okay, first one is your canines and after this you will be having what, the first one incisors, then you have canines and then premolars and then lastly molar children. okay, we have a set of teeth here, right, from here this jaw to, from this side of the jaw to this side of the jaw. so front teeth, that is called what, incisors, and after that we have what, canines, then after we have premolars and later lastly we have molars. all these teeth, ये सारे teeth के different functions होते हैं, and even shapes and even size, everything is different. incisors bite the food, canines used to tear the food, premolars and molars and meant for chewing the food. and जो सामने के जो incisors होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर bite करते हैं, food को bite करते हैं, कतरते हैं. okay, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ कॉल्ड इंसिसर्स. इंसिसर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फूड को टीयर कर रहे हैं. ओके, फाड़ने में यूज़फुल है. एंड जो लास्ट के प्रीमोलार्स एंड मोलार्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, च्यूई करने में, एंड ग्राइंड द फूड, वो फूड को ग्राइंड करते हैं एंड देन वी कैन ईजिली swallow the food children. the tongue help us in swallowing the food. now after chewing the food what we do, फूड को च्यूई करने के बाद, चबाने के बाद क्या करते हैं हम, yes we swallow the food, हम फूड को swallow करते हैं, उसको निगलते हैं. ओके, सो tongue will helpful for swallowing the food. the tongue is a muscular structure present in our mouth cavity. now what is a tongue, tongue एक muscle है which is present in our mouth cavity. it consists of 4 types of taste buds which are helpful in telling us the right taste of the food we eat. एंड जो टंग है वो कितने, वहाँ पर कितने टेस्ट कर सकता है, वो 4 different kinds of taste it can, the tongue can do because the tongue have 4 different kinds of taste buds. taste buds किसको बोलेंगे हम, taste buds meaning ऑन अवर टंग कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, वो टेस्ट बर्ड्स हमको फूड का टेस्ट आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्पफुल होते हैं. ओके, नाउ विच काइंड ऑफ ए food we are eating, whether it is salty or sour or sweet or bitter, that taste buds only helpful for us to tell it or recognize it. taste buds are meant for sweet, sour, salty and bitter tastes. taste buds यहाँ पर किस लिए है कि वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक टेस्ट बड, एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड व्हाट दैट डू कि स्वीट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है. वन अनदर टेस्ट बड रिकॉग्नाइज व्हाट, सोर वन, खट्टा एंड मीठा. दिस स्वीट मीन्स मीठा एंड सोर मीन्स खट्टा. अनदर टेस्ट बड्स विल रिकॉग्नाइज साल्टी, जो नमकीन फूड होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है. एंड अनदर वन बिटर, जो कड़वा फूड होता है वो एक टेस्ट बड्स रिकॉग्नाइज करता है. सो ऑल दिस 4 टेस्ट बड्स हैव 4 different functions to perform. Okay.
सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, एंड माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द salivary glands? We will see now. They produce saliva. Saliva helps in digestion of food, children. Okay. Now जो अपने माउथ में जो लिक्विड होता है ना, वाटरी लिक्विड जो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सलाइवा. एंड वो सलाइवा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सलाइवा? टू डाइजेस्ट द फूड हियर. ओके. ये सलाइवा हमको फूड के डाइजेशन में यूजफुल होता है. आफ्टर स्वेलिंग द फूड गोज इनटू द स्टमक थ्रू ईसोफेगस. नाउ फूड को हम जैसे ही स्वेलो करते हैं, जैसे ही निगल रहे हैं, वो कहाँ पर जा रहा है? स्टमक में जा रहा है. स्टमक में किस तरह से जा रहा है? थ्रू दिस वे, राइट. दिस वे इज कॉल्ड ईसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड दी फूड पाइप. एंड हम उसको फूड पाइप भी बोलते हैं, जहाँ से फूड पास होता है. ओके. फ्रॉम माउथ टू द स्टमक वन पाइप विल बी प्रेजेंट. That pipe kind of a structure will be present, that is called food pipe or esophagus. The gastric juice produces in the stomach gets mixed with the food, and the juices वो उसमें present है हमारे पास, that will get mixes with the food. food के साथ mix हो जाते हैं. Okay. It helps in digestion. The digestion of food is completed in the small intestine, and the digested food is absorbed into the blood. And digestion कहाँ पर complete होता है? हमारे small intestine में present होता है. Okay. And जो food digest हो गया, उसको कौन absorb कर रहा है? That will be absorbed into the blood. Okay. पूरा blood उसको absorb कर लेता है. The large intestine absorb the water from the food, and the undigested food is passed out of the body as feces through the anus. Okay. Now जो undigested food रहता है ना, जो food digest नहीं हुआ, वहाँ पर large intestine क्या करता है कि वो फूड में से पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट कीप सेफ इन द बॉडी. आवर बॉडी नीड्स वाटर, राइट चिल्ड्रन. सो दैट इट कीप सेफली दैट वाटर, एंड द रिमेनिंग जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सक्रीशन. ओके. feces through the anus is the part. Okay children, did you understand this? Digestive system. Okay. Now we have to come to the excretory system. What is this? Excretory system. Now whatever the food we are eating, children, after the digestion, that has to come out, right, for the through the process called excretion. So we have to learn now. The excretory system consists mainly of kidneys. जो excretory system है, mainly it is consist of what? Kidney is responsible for the excretion. The waste product produced by various organs are poured into the blood. Now जो waste whatever the products will be there, materials जो produce होते हैं, कई सारे organs produce करते हैं उसको. Okay. And now that will poured into the blood, जो blood में पूरे mixed हो जाते हैं. The kidneys remove this waste product from the blood. अब किडनी क्या करता है? ये ब्लड को प्योर करता है, फिल्टर करता है, एंड सारे जो वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में मिक्सड अप है, वो सबको रिलीज करता है. There is one pair of kidney in our body. Now total number of kidneys in our body 2. That is one pair. Pair में 2 रहेंगे children. Okay. So one pair, and we have 2 kidneys in our body. Right kidney and left kidney. They are supplied with blood vessels, and kidneys are consist of blood vessels भी present है. Why blood vessels? In our circulatory system we have seen blood vessels are very important to carry the blood. Okay. The impure blood that enters the kidney is filtered, and the impurities are separated in the form of urine. So now here the impure blood that enters the किडनी. अब जो इम्प्योर ब्लड रहता है, ओके, जो अपना ब्लड रहता है, जो गंदा वाला ब्लड जो होता है, वो क्या होता है? किडनी में इंटर्ड हो जाता है, एंड इट गेट्स फिल्टर्ड. वहाँ पर फिल्टर्ड होता है, एंड इम्प्यूरिटी सारा सेपरेट हो जाता है, देन इन द फॉर्म ऑफ ए यूरिन. The urine is collected in the bladder and then passed out of the body through urethra, and whatever the waste material urine is there, that will be collected in the urethra. Urethra is the part of our excretory organ children. Okay. एक्सक्रीटरी ऑर्गन का यूरेथ्रा एक पार्ट है, जहाँ पर क्या होगा कि सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्टेड होगा, एंड लेटर ऑन इट कैन बी थ्रोड आउट. द लंग्स एंड द स्किन ऑल्सो वर्क लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. जो हमारे लंग्स एंड स्किन है, वो भी किस तरह से यूजफुल हो रहे हैं? इट ऑल्सो परफॉर्म द एक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. हाउ चिल्ड्रेन? लंग्स को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे बोल रहे हैं? इन अवर लास्ट पैराग्राफ वी हैव सीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट. नाउ रेस्पिरेशन में क्या कर रहे थे हम? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे थे. सो जो इनहेलेशन है, दैट इज़ ओके, वी आर टेकिंग द एयर इन, बट द एक्सेलेशन, द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कमिंग आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ
excretory organ. Okay, so lungs भी क्या करते हैं? Excretory organ, because it also releases what? Carbon dioxide into the atmosphere. And skin, during any summer time or something else, what we feel children? We feel very hot and we get some sweats. Okay, हमको sweat आता है, पसीना आता है, and that वो sweat जो है हमारे skin के थ्रू बाहर आ जाता है. So skin also is also performing as a excretory organ. Lungs throw out bad air as waste. Lungs क्या करता है? Bad air को जो बाहर फेंकता है, like example कार्बन डाइऑक्साइड को. The skin removes waste water in the form of sweat, and sweat क्या skin क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है स्वेट को इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर इट इज़. ओके, और हेल्थ स्किन रिमूव दैट वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए sweat children. Okay, did you understand this excretory system? Right. The reproductive system. So last one we have is reproductive system. The reproductive system helps in producing babies. Now children, our parents are there, our parents are giving a birth to us, right? So through the process called reproduction. Okay, now we will be able to give the birth to someone else, that is also kind of a reproduction. Okay, now if one plant we have, that plant if we give the seeds, okay, that plant is giving the seed, and another plant can be born through the seeds, right? So what we are saying, this is also its kind of reproduction. The reproductive system helps in producing babies. It includes various genital organs. The genital organ in male and female are different from each other. So whatever the reproductive organ will be there, that is different in female and that is different in male children. Okay, so this is about our lesson. With this we have completed our lesson. I hope you all have understood. So what we have learned children? We have learned about the organ system and we have seen the function of some of the organ system also. Now come to this part. See this picture which I have shared now. Children, already in our last class also I have shared you this picture. Yes. So you have to complete this answer. Those who have written, that is very good. Those who have not completed, please once again I am sending this picture just to make you complete. You complete this in your notes children. Okay. Total we have 6 answers. You can complete these 6 answers. Okay. You can take the screenshot also, later on you can complete. If you have any doubt, then underline and keep it. We will solve it later children. Okay. So with this we have completed our class. Inshallah I'll be back with the next video. Till then, take care and have a nice day everyone.